Hello students, good afternoon you all. Welcome to one more session from Infinity Learn by Sri Chaitanya. How are you all? I am Suresh, Faculty of Chemistry from Infinity Learn. Welcome to the session. Good afternoon my dear students. Hello Vanga, hello, hi. Richa Sharma, hello, good afternoon. So we are in NEET STEP UP 2025 program. We are working on total chemistry syllabus every day 1:30 to 3 o'clock. So in a week, first 3 days we are going to discuss about 11th standard syllabus, and the next 3 days it will be a 12th standard syllabus. So these sessions, if you follow, you are going to get a very good score and pakka seat guarantee, and if you work well according to our guidelines, you are going to get an excellent rank as well. So it's a rank guarantee program online by YouTube channel by NEET Infinity Learn, right? So you all share these sessions and like and subscribe to the links given here. How are you all? Great to see you. Fine, me fine, thank you. How are you doing? Very good. Can you able to see me? Can you able to hear me? So please confirm. A thumbs up or fire emoji. Richa Sharma. Yeah. Anybody is there, right? Good. So we are in haloalkanes and haloarenes. Yes, any doubts? Fine. Richa Sharma, can you able to hear me? So give some confirmation. Yes. Yes. Right. So in this NEET STEP UP 2025 program, we are running physics, chemistry and biology right from 12 o'clock to evening 6 o'clock. So you all just follow the schedules and a link is given. So you just join in that link. You will be getting continuous updates so that you can join the sessions according to the schedules, right? So in this chemistry session, we are going to discuss about in today's class haloalkanes and haloarenes. Okay. Hi, Rushan, good afternoon. Good afternoon to see you. Right. So in the haloalkanes and haloarenes, we started yesterday. It is a 12th standard, first chapter in the organic chemistry, part 2 NCERT. So this haloarene and haloalkane and haloarene chapter is quite important for NEET examination. And this particular concept is a junction in any kind of organic conversion. So that is the importance. So you have various named reactions, you have various type of reactions like nucleophilic substitution reactions and elimination reactions. And in this particular session, we are going to talk about the reactions of nucleophilic substitution reaction SN1 and SN2 and elimination reactions E1 and E2 and substitution versus an elimination in this session, right? So how are you all? Rushan? Richard, you are not responding. What happened to you? Right. That's good. Fine to see that. Okay. So in this chapter, yesterday we discussed about the properties, right? So in today's class, in the previous class, what we learned, haloalkane and haloalkane, haloarene classification. In that we have seen primary alkyl halides, secondary alkyl halides, tertiary alkyl halides, right? Okay. And allyl and vinyl, right? So understanding between benzyl and haloarene and allyl and vinyl makes a sense over there to identify its specific chemical reactivity, my dear students, right? और दूसरा आएगा methods of preparation of RX. RX से है क्या? alkyl halide. उसमें आप देख ले, सो अल्कोहल से कर सकते हैं, अल्केन से कर सकते हैं, अल्कीन से कर सकते हैं, सब कल कर लिया, so that you can just get from alkanes and alkenes and alcohols. In this alkanes क्या मेथड इस्तेमाल करना बेटा? Alkanes undergo free radical substitution reactions, है ना? Alkenes undergo electrophilic addition reaction, my dear students. Ishita, hi, you are late. I am just recapturing what happened in the previous class, beta. Okay, so in the alkenes, you use मार्कोनी का रूल के हिसाब से प्रोडक्ट देना है,
एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन का हिसाब से प्रोडक्ट देना है, कभी कभी एल्लाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी दिया गया। सो अगर कुछ डाउट है ना तो अभी पूछना बेटा, इट्स ओके बेटी, it's not an issue, just I am recapturing what exactly happened in the previous class. If you are not attended the previous class, replay is available on the YouTube platform and you can attend that, and you can just write a comment for your doubt, so that the comment is going to be getting honored and an appropriate answer you are going to get it. Okay, so from alcohols, PCl5, PCl3, okay, anhydrous zinc chloride and HCl, and we use thionyl chloride also. Okay, sound ashram, oh, 568 marks. C category 18,000. Can I get government medical college Mumbai only from Maharashtra? पक्का आपका मिलेगा बेटा, आपका नाम क्या, आपका मिलेगा 568 का मतलब 118907 1 lakh, so 4,000, year rank 4880, definitely you will get it better. Okay, anyways, this particular session is about discussing the concepts in the NEET 2025 का step up program क्या है, and for NEET kind of क्या rank prediction, re-NEET होगा, सब ये दूसरा प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा आपका, right? Now in this session, please, we are not discussing any kind of other stuff, okay, not an issue, you can ask if at all, right? But the main course of the session is not that, right beta? Ashram, is that fine? आपको मिल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मार्क है, मिलेगा, पक्का मिलेगा, है ना, कुछ तकलीफ नहीं है, right? Anyways, so please do hit share and a like button and subscribe to the sessions and this NEET Step Up 2025 channel, right? Okay, that's good, congratulations, right? So from alcohols we see, and what we are going to learn, halogen exchange reaction, उसमें क्या चीज आएगा, from alcohols सबसे अच्छा मेथड क्या होगा, preparation of RX from alcohols. So we have seen PCl3 से कर सकते, PCl5 से कर सकते, anhydrous zinc chloride HCl से कर सकते, HX से कर सकते, एंड SOCl2 भी कर सकते हैं, उसमें सबसे अच्छा मेथड क्या होगा, रिचा, इशिता, you can say, so as many इतना सारा मेथड्स है, लेकिन अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड अच्छा वाला है, सबसे प्रेफर्ड क्या है, वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नीट के हिसाब से, उसमें SO2Cl2 थायोनाइल क्लोराइड इस्तेमाल करो, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट्स मिलेगा ना HCl से एंड SO2 and these two are gases, so that recovery of RCl alkyl halide is going to be very easy, आसानी काम है, so that among all preparation of alkyl halide from alcohol thionyl chloride इस्तेमाल करने का अच्छा होगा, राइट बेटा। नेक्स्ट हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या क्या चीज आएगा आपको बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में जल्दी बोलो। हाँ रुशान, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या क्या चीज आएगा, ऋचा शर्मा, ओके ऋचा शर्मा कल क्लास में बता दिया मैं ये दोनों मेथड्स, ओके हाँ सो कल का क्लास में बता दिया मैं ऋचा शर्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो चीज है आपका, दो चीज है, एक है फिंकलस्टेन रिएक्शन बेटा ऋचा शर्मा फॉर यू, वो एक चीज है फिंकलस्टेन रिएक्शन, एंड दूसरा चीज है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये फिंकलस्टेन रिएक्शन में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिंकलस्टेन रिएक्शन में आपका आएगा सो अल्काइल क्लोराइड, सो ऑलरेडी एक हैलोजन है, ये दूसरा हैलोजन से एक्सचेंज कर सकते हैं, सो व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ सॉल्वेंट,
सो आपका आएगा Ri plus NaCl. This reaction is known as Finkelstein reaction. समझे? This reaction is known as Finkelstein reaction. Now Schwarz reaction में you are going to react with fluoride, silver fluoride. You are going to get Rf plus AgCl, right? Alkyl fluorides करने का ये Schwarz reaction आपके इस्तेमाल किया जाएगा, एंड alkyl iodide करने का आपका Finkelstein reaction इस्तेमाल किया जाएगा. These are all the reactions that we discussed in yesterday's class. जब आप alkene से करना है मार्कोनिकॉफ इस्तेमाल करो, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अगर पेरोक्साइड आएंगे तो HBr ओनली वर्क्स विथ पेरोक्साइड, राइट बेटा? वेरी गुड. एंड अल्लाइलिक भी होगा, समझे? सो आज हम क्या करने वाला है? हम क्या करने वाले? केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स करना है बेटा, राइट? एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें ये न्यूक्लियोफिलिक, यस, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में SN1 आना है, SN2 आना है, फिर SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, एंड एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन भी करना. एट द एंड इफ टाइम प्रोवाइड्स वी कैन जस्ट सी हैलोएरेन प्रिपरेशन. ये आज का मेन कोर्स है, ठीक है? सो उसमें हम केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअल्केन शुरू करना. केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअल्केन्स, ठीक है बेटा? सो इन दैट, राइट, दैट्स गुड. सो इन द केमिकल रिएक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ. जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें पुराना बॉन्ड रिएक्टेंट से तोड़ना है एंड नया बॉन्ड प्रोडक्ट्स में बनाना है ना बेटा. सो जिस बॉन्ड जल्दी तोड़ना है वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट जाना है. सो आई वांट टू से द लेसर द बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर इज द केमिकल रिएक्टिविटी. सो दैट इफ यू सी, सो कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड जो है ना, इसका बॉन्ड एनर्जी यू कैन से इट इज ए बॉन्ड एनर्जी ग्राफ का है. इसका बॉन्ड एनर्जी इतना बड़ा है. कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू ब्रोमीन एंड कार्बन टू आयोडीन. So carbon to iodine bond is so weak. So bond energy का ऑर्डर, आपका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, alkyl fluoride is more than alkyl bromide, alkyl chloride is greater than alkyl chloride is greater than alkyl bromide is greater than alkyl iodide. उसमें है ना, उसमें आपका रिएक्टिविटी आएगा उल्टा. सो रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है वो कम रिएक्टिव होगा, जिसका कम है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. So order of reactivity, alkyl iodide is more than, alkyl bromide is more than, alkyl chloride is more than alkyl fluoride. So it could be any kind of reaction. This is important. So आपका गलत समझे. So yes, I understand your doubt. Okay, here alkyl fluoride is less reactive. Sir, आप बोल रहे थे fluorine is more reactive ना? अरे fluorine is more reactive. Once the fluorine is made a bond ना, इसका जो कंपाउंड कम रिएक्टिव होता कहीं जगह पे, खाली फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, है ना? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस. सो टोटल haloalkanes and haloarenes follows this order, right beta? Clear? Any doubt? So Ishita, fine, that's good, right? Ashram, okay, Richa beta. So let's go ahead. So chemical properties of haloalkanes. Haloalkanes are highly reactive of aliphatic compounds because of the bond polarity. This is due to the polarity between carbon to halogen bond.
So the halogen is fluorine, chlorine, bromine or iodine. That's good. So that carbon to हाइड्रोजन द कार्बन टू हैलोजन जो बॉन्ड है ना, ये पोलर बॉन्ड है. ये पोलर बॉन्ड के वजह से ये वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. सो दैट पोलैरिटी मेक्स इट मोर रिएक्टिव अमॉन्ग एलिफैटिक सिस्टम. अंडर द हेडिंग ऑफ एलिफैटिक सिस्टम, haloalkanes are the highly reactive species. Understand? So the carbon to halogen bond, the molecules, so larger the bond dissociation energy of CX bond, lesser is the reactivity. मैं जो भी बोल रहा हूँ इसी का हिसाब से reactivity inversely proportional to the bond energy बेटा. So the bond dissociation energy जिसका कम होगा उसका reactivity ज्यादा होगा, right बेटा. So that carbon to chlorine is more than carbon to bromine is more than carbon to iodine. So dissociation energy. यहाँ पर fluorine is completely out of the game. Fluorine का behavior in the compound itself is different, so that I don't want to make it in the generalized order, my dear students. So for a given alkyl group, the order of the reactivity, iodide is greater than bromide is greater than chloride. का मतलब क्या, alkyl iodide is more reactive than alkyl bromide is more reactive than alkyl chloride. Alkyl chloride. समझ में आ रहा है क्या? That's good, right? So आगे बढ़ो. So इसका हिसाब से हमारा जो ये चैप्टर में आपका सब्स्टिट्यूशन आएगा and elimination भी आएगा, so that we can go into the nucleophilic substitution reaction. In haloalkanes, you can see in haloalkanes bond between carbon and halogen is a polar bond. मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे, so carbon and halogen, and it is going to be partially negative charge, it is going to be partial positive charge. That charge separation is called a polar bond. ठीक है बेटा. And hence the carbon atom gets positive charge and the halogen atom gets negative charge. So that a nucleophile react with an haloalkane having a partial positive charge on the carbon atom be bonded to the halogen. एक क्या की चीज है? This is talking about a nucleophile. Okay, talking about a nucleophile. What is the meaning of a nucleophile, my dear students? A nucleophile क्या? A nucleophile क्या? So anybody can give it? Richa Sharma, okay, Ashram and Ishita. I want to know what is a nucleophile, my dear students. Tell me, come on. So अगर आप बोलने तो आप आगे बढ़ना है, so that I understand where I have to start. So if you are okay with the nucleophile, I will start directly with the nucleophilic reaction, right? है ना. अगर कुछ डाउट है ना तो पूछना. What is a nucleophile here? आप बोलना पहले. मेहनत हर एग्जाम मेरे. Okay, right. Come on. What is a nucleophile? So in order to understand a nucleophilic substitution reaction, we have to understand a nucleophile. Nucleophile होता है क्या? जल्दी. Rushan beta, clear, that's good. Okay, come on. What is a nucleophile? If you know, otherwise I'll tell. Nucleophile is a species which attacks at carbon, positively charged carbon. It attacks a species attacks at positive charged carbon. So what is this symbol? That is delta, partially positive or total positive? Partially positive charged carbon. Say an example. Let us talk here. OH minus is a nucleophile. So when carbon halogen is there, right? Carefully you see. Yes, correct. Richa Sharma, you said it is correct. Because of this, halogen is negative charge, carbon gets positive charge, right? So ये वाला है, ये negative charge is going to attack at the positive charged carbon. So it is called a nucleophile. This nucleophile is indicated by using a symbol called Nu. Nu minus.
पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ यस करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। सो ए बेस होता है क्या फिर, बेस, okay, base, so you can say it is as a B minus, right? So this base means a species, a species which attacks at hydrogen atom, which abstract hydrogen atom, better use say, which abstract बेस, इसका एसिड पसंद करते हैं, सो एसिड बेस रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल इसका पॉजिटिव चार्ज कार्बन पसंद करते हैं, सो दैट लेट अस टॉक अबाउट OH minus over here. When you talk about, right, if it is a halogen, okay, if it is a hydrogen, you can see as we have, this is a positive negative charge, this is going to be a positive charge, ये positive charge का हिसाब से ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, सो ये पॉजिटिव चार्ज का वजह से ये नेगेटिव चार्ज ये H प्लस पकड़ के सो एलिमिनेशन होता है। So this OH minus can attack on H, this OH minus can attack on carbon. So a nucleophile can behave as a base. All nucleophiles are bases, mind it. But कितना न्यूक्लियोफिलिक है, कितना बेसिसिटी है, ये कंडीशंस का ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यू कैन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन यू डिसॉल्व इन द वाटर एंड पुट इट विथ RX, सो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड RX से रिएक्ट कर रहे हैं ना, उसी का समय में डिसाइड करते हैं ये न्यूक्लियोफाइल का तरीका रिएक्ट करना है, इलेक्ट्रो एलिमिनेशन में ये बेस का तरीका रिएक्ट करना, ये कंडीशंस डिसाइड करते हैं। सो चलो हम आगे बढ़ेंगे, सो सब आपका मिलेगा, राइट बेटा? रिचा, गॉट इट? फाइन, एनी डाउट? दैट्स गुड, वेरी गुड। अशरम, right, what about Ishita beti? Ishita? Right, very good. Now let's talk about nucleophilic substitution reaction. यही आपका nucleophilic substitution reaction, जब nucleophile है ना, so you can see the nucleophile का जो है आपका examples होगा, right? You can see F minus is a nucleophile, Cl minus is a nucleophile, Br minus is a nucleophile, I minus is a nucleophile, Cn minus is a nucleophile, OH minus is a nucleophile, SH minus is a nucleophile. Okay, any negative charge, any electron rich species, any negative charged species, any species which try to like a carbon of the positive charge is going to be a nucleophile. So we can say nucleophile is a species which attacks at positively charged carbon. जो भी species है, so positive charge कार्बन में अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। ये न्यूट्रल भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता। सो ये वाला नेगेटिव चार्ज वाला का न्यूक्लियोफाइल है। कहिए आप देखें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल देखें? हाँ, देख सकते हैं ना? यस, यू कैन सी वाटर इज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, H2O उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, उसमें NH3 ए न्यूक्लियोफाइल। प्राइमरी अमीन इज ए न्यूक्लियोफाइल और NH2 दिस इज। सो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए। ओके, सो अल्कोहल भी हो सकता है और OH है ना, राइट? यू कैन सी दिस। एनी डाउट? रिचा, फाइन, एनी डाउट? सो जोश कहाँ है क्लास में?
आप सिंपली रेडियो तरीका सुन रहे हैं ना, ऐसे ये रेडियो क्लास बिल्कुल नहीं है, ये लाइव क्लास में है। लाइव क्लास में आप डाउट भी पूछ सकते हैं, कम से कम एक डाउट पूछना है। सो यू सेड दैट सर आई हैव सम डाउट्स इन द केमिस्ट्री, सो वंस दैट वाज, ये इतिहास में था, you are just kept in the history of your career. So when you are starting the classes with मेरा तरफ से एक क्लास दे रहे हो ना, क्लास के बाद पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए, है ना। दैट्स गुड रिचा। सो आगे बढ़ेंगे। सो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। सो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कार्बन, और जो मान लो ये जो भी अल्काइल ग्रुप होगा इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, जो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज कार्बन से काटने के बाद ये बॉन्ड निकल रहे हैं, सो दैट ए न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेसिंग द लीविंग ग्रुप। जो हैलोजन ग्रुप है ना, हैलाइड X माइनस, जो भी Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस जो भी है, that is called leaving group here. So the reactivity is directly proportional to the leaving ability. So leaving ability किस चीज में डिपेंड करता है? leaving ability बॉन्ड एनर्जी का हिसाब से डिपेंड करता है। किस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम है वो बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है। सो ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या? एक चीज निकाल के उसी जगह पर और एक स्पीशीज ऐड करना है। सो ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, माय डियर स्टूडेंट्स, with a halogen atom here, this with a leaving group departs as a halide since the substitution reaction is initiated by nucleophile. So the nucleophile is replacing halogen. So a strong nucleophile replaces a weak nucleophile. That is a logic, right? So जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काट रहे हैं ना, so that is called strong nucleophile. And this is a weak nucleophile. Always strong nucleophile replaces weak nucleophile. सर हमको कैसे पता चलेगा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जिसका ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगा। So all strong bases are strong nucleophiles. Are you getting or not? Fine, that's good. So a very important factor I just want to give you. Nucleophile is a species which seeks the attack of the electrophilic region. Here हमारा electrophilic region क्या होगा? Positively charged carbon. Okay, carbon with a positive charge or a positive charge, partial positive charge. It is able to share the rich electron cloud with electrophilic species. Some important rich electron species: hydroxide, cyanide, alkoxide, so carboxylate, okay, or S minus. So the mechanism we are going to learn now. The mechanism we'll learn now. So I just want to give you who is a strong nucleophile. Okay, so nucleophilicity. So this is, you can say, strength of nucleophile. You can say Nu is a nucleophile. I just want to give you a few important tricks to understand the nucleophilicity. पहला जो चीज है, इलेक्ट्रॉन देने का संभावना जिसका ज्यादा है वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, पहला जो चीज है, फर्स्ट वन, केयरफुली इसी नीट एग्जामिनेशन में आपको काम आ जाएगा बेटा। सो नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल। नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल, है ना। इसका जो एग्जाम्पल है
OH minus is greater than H2O. OH minus is stronger nucleophile than H2O, which is a weaker nucleophile, because H2O is a neutral, OH minus is a stronger. समझे बेटा? Clear? Very good information, very good information. And the second one जो है, nucleophilicity is inversely proportional to electronegativity of the donor atom. Donor atom. यहाँ पर example देना है OH minus, right, and SH minus. Here sulfur is the donor atom, oxygen is the donor atom. So sulfur का electronegativity कम है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. सो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है का मतलब क्या? सो इलेक्ट्रॉन लेने का संभावना इसका ज़्यादा होता है, देने का संभावना टेंडेंसी कम होता है. सो दैट न्यूक्लियोफिलिक strength is going to be like this. You understand? And nucleophilicity is inversely proportional to steric. As steric hindrance increases, nucleophilic strength decreases. Nucleophilic strength decreases. H2O, okay, CH3OH, C2H5OH. उसमें H2O में स्टेरिक हिंडरेंस बिल्कुल नहीं है. मिथाइल ग्रुप में कुछ स्टेरिक हिंडरेंस है एंड इथाइल ग्रुप में और ज़्यादा हिंडरेंस है. सो एज स्टेरिक हिंडरेंस इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, है ना. सो न्यूक्लियोफिलिसिटी का टेंडेंसी आप सीखने का अच्छा होगा, बिकॉज ये नीट एग्जामिनेशन में बहुत काम आ जाएगा. और फोर्थ पॉइंट, a very important point, so the electronegativity. So nucleophilicity, fluorine is greater than, chlorine is greater than, bromine is greater than iodine. So this is a polar aprotic solvent. सॉल्वेशन अगर ज़्यादा होगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये ऑर्डर रिवर्स होगा. सो ये क्या चीज़ है? F माइनस लेस देन Cl माइनस लेस देन Br माइनस लेस देन I माइनस. सो दिस इज अबाउट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. सो सॉल्वेंट्स ब्राउन स्टेडलाउरी थ्योरी में आपको केमिकल एसिड बेस थीरीज में आएगा. सो सॉल्वेशन का हिसाब से, सो F minus is highly hydrated by water, so that F minus is wrapped with the polar protic solvent like water. So solvent, polar protic solvent like water, so that F minus is completely wrapped. So F minus को ऊपर वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किया गया, so that F minus का स्ट्रेंथ इज हाइड्रेट, छुपा के रखते हैं अंदर. सो दैट इसी का न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रेंथ एक कम आ जाएगा. So you need to know, in order to learn this nucleophilic substitution reaction, nucleophilicity, the order of the nucleophilicity. So Ishita, any doubt? Richa, come on. और कुछ है ना तो डाउट है ना तो पूछना जल्दी, फटाफट करने दें. Yes, great to see. Come on. So we'll start nucleophilic substitution reaction. Yes, यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म दिया. So you can see marks versus rank, everything you will get it from that Google form. You will be getting a reciprocation from the Infinity Learn. And also Telegram channel is also given. You join in this Telegram channel, therefore you are going to get all kind of updates on NEET Step Up 2025 program. And also you will be getting updates on the class schedules and all. And of course the class notes, सारा के सारा class notes आपका बिल्कुल free of cost में मिल जाएगा ये Telegram channel में, है ना बेटा.
इसी के पहले क्या करना, आप एक बार लाइक मारना, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो आपका फ्रेंड्स को भी कुछ भला होगा, एंड यू जस्ट सब्सक्राइब टू द नीट इन्फिनिटी लर्न चैनल, है ना। आप कर लिया, हाँ, वेरी गुड। आर यू गेटिंग अपडेट? इशिता, आर यू गेटिंग? Simran शायद, yes, that's good. अरे Simran, you are not asking any doubts. Why? People are asking. I am not going to ask you any fee. ट्यूशन फीस मत देना यार, सिर्फ लाइक मारो बस। ओके, कम से कम चार्ट में फायरी इमोजी डालो। ओके सिमरन, एक थम्स अप एंड फायरी इमोजी डालो सब लोग, कम ऑन, सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। चलो, हाँ, यस, this is your first class, then you are the luckiest person, Simran. So your understanding, Simran, ek thumbs up there, or your understanding. So this kind of things are not given in any kind of books like in my class. Yes, that's very good, thank you. So आगे बढ़े आज, very good. Yes, now न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला जो है सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर, राइट। सो इन दिस nucleophile is attacking, if it is okay, otherwise I'll draw the things over here, right? Okay, let us see. Carbon, this is, in simplified version I will just give Cl, R1, R2 and R3, right? Carbon and halogen, this is a partial negative charge and this is going to be partial positive charge, ठीक है। So that there is a dipole moment, bond is polar. Mishra, hi. Is this your first class, Mishra? I am talking about SN2 beta. I am talking about SN2. So this is about SN2, substitution nucleophilic bimolecular. Substitution nucleophilic bimolecular. Now when you add some nucleophile here, what is that nucleophile? OH minus, है ना। सो ये निकलने वाले हैं जो ग्रुप ये अल्काइल हैलाइड से निकल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप, Lg, राइट। ये लीविंग ग्रुप है। सो लीविंग ग्रुप इस तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, इस तरफ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल अंदर घुसने का मुश्किल बात है। देयरफॉर ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके ये काटने का कोशिश करते हैं। सो पीछे से काटने का कोशिश करते हैं। सो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड। होप यू अंडरस्टैंड मिश्रा, सिमरन, राइट, थैंक यू वेरी मच। सो जब ये काटने का कोशिश कर रहे हैं ना, ये नया नया जो बॉन्ड ये न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन के बीच में तुरंत नहीं लगेगा। सो धीरे धीरे से लगने की कोशिश करना है। सो दैट OH माइनस जो है, सो ये कार्बन से, ओके, सो दैट यू कैन से R1 एंड R2 एंड R3, है ना। सो दैट जब ये काटने में कोशिश करना है ना, ये बॉन्ड ब्रेक करने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं। सो दैट व्हाट हैपन, दिस इज द वन यू कैन सी, right, this is the bond, try to break, so that a chlorine, this is the bond try to make, है ना। there is no bond completely formed between nucleophile and the carbon, there is no direct bond, bond is not completely broken here, right? So that you are going to see, this is what you call it as a transition state. Transition state you can say it's a TS. ये transition state, yes, transition state ये जो state है, जो reaction में एक state, a पुराना bond completely not broken
Okay, and naya wala bond completely not formed. So there is an imaginary state. There is an imaginary state that is called transition state, Simran, that you said correct. That you can say TS. So this is a state. So actually what happened when this bond makes it completely, this bond is going to breaks it completely, make it and break it simultaneously. So that what happened, the product that you are going to see here, OH carbon, right? So R1 and R2 and R3, right? ये ट्रांजिशन स्टेट आने के वक्त में, so this is a, first of all it is a single step reaction. सर आप यहाँ से यहाँ एक स्टेप लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक और एक स्टेप लिख दिया. ओके, सो दैट हाउ डू यू क्लेम दिस इज अ सिंगल स्टेप? ये दो स्टेप का दिख रहा है ना. कैन एनीबडी ओपन द लॉजिक? कैन एनीबडी ओपन द लॉजिक माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यहाँ पर दिस इज इमेजिनरी ट्रांजिशन स्टेट जो है ना, ये इमेजिनरी स्टेट है. सो दिस यू डोंट consider as a single step, as a double step, right? So it is a single step, and the rate of the reaction depends on both alkyl halide and this is your nucleophile, right? Nucleophile. So chemical kinetics का हिसाब से, so this 1 plus 1 is equal to 2, order is equal to 2, and molecularity also 2, right beta? Yes. Why? What is the molecularity? Chemical kinetics में आप पढ़ा लिया, right? So the number of reacting species that makes a collision in a single step is called molecularity. याद है? Yes, Imran, correct it is. Yes, पक्का. That's good. Roshan, that's good. So some कभी ना कभी and कुछ भी ना कुछ आपका मैसेज देखने को आपको खुश लगेगा. Right, right. So that it is a single step. So this is what you call it as molecularity 2. This is a nucleophile is substituting, so that Cl minus निकल गया है ना. So that it is called as substitution nucleophilic bimolecular. That is what it is, second order nucleophilic substitution. So a bimolecular nucleophilic substitution or substitution nucleophilic bimolecular. So the rate of the reaction is dependent, I said it is dependent, is very important, on the concentration of alkyl halide as well as the concentration of nucleophile. Molecularity is sum of species, no. Molecularity is the number of reacting species that are making a collision, है ना Simran? So the rate is equal to K Rx and nu. Nu stands for nucleophile, Rx is equal to here any substrate of alkyl halide. Any doubts? That's good, nice participation. Primary alkyl halide react by SN2 mechanism via formation of transition state. The reaction between the methyl chloride and hydroxide ion, that's what you say. Here you can say, if you consider this as right, if you consider this as, you can say methyl chloride is reacted with sodium hydroxide aqueous, sodium plus OH minus. So OH minus is the nucleophile here. This nucleophile is going to attack here, so that this is going to be expelled away, so that you are going to get methyl alcohol in a single step, sodium chloride as a product. So this is a nucleophilic reaction
follow second order kinetics, so that you can say it is a nucleophilic substitution reaction bimolecular. Is that fine, Risha Kaushik? New to this student, new to this session. One more student, Richa Sharma. Okay, one more Richa is there, Richa Sharma, and here Richa Kaushik also. Richa Sharma become Richa Kaushik or kya? You changed your name? Okay, chalo. Yes, correct, right, correct, pakka. Okay, your name is looking changed. Okay, now talking about, so this is a single step. In this single step, free energy and potential energy in the progress of the reaction, and the reaction is going to reach one peak, so that, and it is coming down. So the highest peak is called transition states. ओके अगर इंटरमीडिएट आएगा ना आपका थोड़ा डिप आएगा, सो हर इंटरमीडिएट का 2 ट्रांजिशन स्टेट निकलेगा, सो केमिकल काइनेटिक्स का हिसाब से, है ना बेटा सिमरन? यस डन. सो ह्यूजेस एंड इनगोल्ड, सो ये 2 साइंटिस्ट है ना, सो दे प्रपोज्ड SN2 mechanism. Okay, is a one step mechanism. That's very important. It is a one step mechanism. So one step mechanism, number of peaks in the reaction coordinate is equal to number of steps. ये ट्रिक मान लो आपका नीट में चलेगा. So number of steps is equal to number of peaks. ये ग्राफ में ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ बोल रहे हैं. सो ये ग्राफ में आपका एक ही पीक आ रहा है ना. प्रजापति, यू आर लेट टुडे, you are late today, right? Come on. So number of peaks are 1, so that it is a single step reaction. है ना बेटा? That's good. So methyl bromide gives rise methyl alcohol. This is one example. Yes, Risha, fine. Any doubt, my dear students? Any doubt, my dear students? So let's talk about उसमें कुछ चीज है. The leaving group, you can see this is the reaction, this is the reaction, this is the reaction. जहाँ पर leaving group ये इस तरफ है ना? जो न्यूक्लियोफिल है इस तरफ है, right? So complete stereochemical inversion takes place during SN2 reaction. That is what you call it as Walden inversion. Okay, Prajapati, we are talking about science, so you attend this class. Okay, at the end you will understand what is science. Science is a study, okay, study of a question. अभी हम नीट प्रोग्राम में अब प्रिपेयर करना चाहता हूँ नीट. ओके प्रजापति, ओके चलो कम ऑन. सो फिर भी ये रिएक्शन है और एक बार देख लो. ओके क्लोरीन, राइट, कार्बन, क्लोरीन एंड यहाँ पर R1, R2 एंड R3. मान लो ये प्लस आइसोमर है डेक्स्ट्रोरोटेटरी का, मान लो, right? So when it is treated with sodium hydroxide, okay, you are going to see nucleophile पीछे से काटना है ना, so that पीछे से काटना, so that it is going to leave here. So आपका मिलेगा जो product carbon and OH and R1 and R2 and R3. So this R, let us say this is R, you can say this is R and this is going to be S configuration hoga. So stereochemical inversion takes place during SN2 mechanism. So that is what you call it as Walden inversion. Walden inversion is a characteristic feature of SN2 reaction, my dear students. Simran, fine, okay, that's very important. So the order of reactivity of alkyl halides through SN2 mechanism है आपका
जहां पर स्टेरिक हिंडरेंस ज्यादा होता है वहां पर SN2 कम होता है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको देना चाहता हूं मैं। सो SN2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक। बस क्यों? ये न्यूक्लियोफाइल अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं ना। अगर यहां पर ये ग्रुप बड़ा है, अगर ये ग्रुप यहां पर बड़ा है, राइट, यू कैन से, अगर ये ग्रुप बड़ा है, ओके, ये न्यूक्लियोफाइल ये दोनों का बीच में अंदर घुसने के बाद ये कार्बन को काटना मुश्किल काम होगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल का साइज है, ओके, और जो भी अल्काइल ग्रुप का साइज है, सो और अल्काइल ग्रुप का साइज इतना बड़ा होगा, इसका रिएक्टिविटी SN2 में इतना कम होगा। अंडरस्टैंड? ओके, आदि शुक्ला, हाई, यू केम लेट, व्हाई you came late? So that I just want to say SN2 reaction is inversely proportional to steric A. So ये सीधा इस्तेमाल करो, ये नीट में करना है, अच्छा होगा। So however the concept is so complicated, okay, so that complicated topics are going to be simply addressed by simple tricks given by your Suresh sir, है ना? प्रजापति, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। सो दैट ये मिथाइल ग्रुप जो है इतना ही है, राइट, इथाइल ग्रुप है, सो दैट C2H5, राइट, आइसोप्रोपाइल मीन्स CH3 CH एंड CH3 आइसोप्रोपाइल। टेरिसरी ब्यूटाइल का है CH3 and CH3, है ना? You can see here मिथाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर इतना ही है ना, एंड इथाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर इतना है। आइसोप्रोपाइल और बड़ा है, सो दैट टेरिसरी ब्यूटाइल इतना बड़ा है ना बेटा? सो दैट you can see this one or this one और this one और this one। so as साइज इतना बड़ा बड़ा हो रहा है ना, इसी का अंदर न्यूक्लियोफाइल घुसना बहुत मुश्किल हो रहा है। so that it is less reactive, reactivity का statistical permutations is given, percentage of reactivity score। मिथाइल हैलाइड्स 30 है, इथाइल हैलाइड 1 है, आइसोप्रोपाइल 0.02, टेरिसरी ब्यूटाइल 0। सो टेरिसरी ब्यूटाइल कभी SN2 रिएक्शन में नहीं इन्वॉल्व होता है ना? दैट्स गुड, वेरी गुड। नाउ द रिलेटिव रेट, मिथाइल इज मोर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिसरी, मान लो, you just keep this in your mind, right? So alkyl methyl halide, primary alkyl halide, secondary alkyl halide, tertiary alkyl halide do not react in SN2. That's very, very important, very important. ठीक है बेटा? Now let us go with the first order nucleophilic substitution reaction SN1. So let us talk about SN1. आपको जैसे SN2 के जैसे SN1 substitution nucleophilic unimolecular reaction. Let's talk about this reaction here. Right here it's a chlorine. So SN2 में न्यूक्लियोफाइल शुरू कर रहे हैं रिएक्शन। यहां पर SN1 में जो भी सॉल्वेंट आप इस्तेमाल करो, इफ यू यूज ए सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट ये दोनों का बीच में पोलराइज करने का, राइट, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रोकन इमीडिएटली। ये काम कौन कर रहे हैं? सॉल्वेंट कर रहे हैं। सो सॉल्वेंट इज द इनिशिएटर फॉर SN1
very important है ना. So that this is the rate determining step, क्योंकि आपका Cl माइनस निकल गया, आपका कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड. जहां पर कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, कार्बन R1 R2 R3 है ना. So this is the carbocation. So this is the carbocation. I just want to give you, it is sp2 hybridized. This is sp2 hybridized. So ये carbocation का you have unhybridized pure p orbital that lies on the carbocation. So that is positive charged है ना. So this is a, hi Nishant, hi, right, the solvent is going to take the nucleophile out, so leaving group out, so that you got a carbocation. This carbocation formation is the rate determining step, RDS, rate determining step. ठीक है. So yes, this carbocation has vacant pure p orbital. Now what happened here, the nucleophile, so the nucleophile is going to be OH minus. This nucleophile can attack, ये आगे से काट सकते हैं, पीछे से भी काट सकते हैं. ओके, सो आगे से काटने का कोशिश करो, यस आगे से काटने हैं है ना. सो आपका मिलेगा, पीछे से काटने का कोशिश करो, सो 50-50 चांस है. सो दैट आपका प्रोडक्ट मिलेगा, आपका प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन R1 R2 R3. अगर आप आगे से काटने तो क्या होगा, OH. Now if it is attacked from the back side, it is going to form the OH. So मान लो ये वाला, ये पॉजिटिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, इसका हिसाब से ये डेक्स्ट्रो होगा, ये लीवो होगा है ना. सो 50-50 चांसेस हो गया. ओके निशांत, leave it here. Hope you are all understanding. So what is happening here, it is a two-stepped process. This is a two-stepped process है ना. In this two-stepped process, first one is rate determining step and it is slow, formation of a carbocation. Yes Ishita, second one is the fast step, so that reaction is stopped there. So in this rate of a reaction is directly proportional to, सिर्फ alkyl halide का है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तक न्यूक्लियोफाइल आपको इन्वॉल्व किया नहीं, so that you can say like this, or rate of a reaction is directly proportional to alkyl halide, खाली alkyl halide का. So the order of the reaction is 1 and it is unimolecular reaction. This is unimolecular. समझ में आ रहा है क्या? So that is the basic difference between SN1 and SN2 beta. Right? SN1 SN2 के बीच में ये अंतर होता है. So SN2 सिंगल स्टेप का है and SN1 जो है ये 2 स्टेप का रिएक्शन है. इशिता फाइन. So Simran fine. Are you getting or not?
दैट्स गुड, दैट्स गुड. निशांत, होना है क्या? कुछ डाउट है ना तो पूछना. ऋचा शर्मा, right, that's good. Now let's talk about, this is the SN1 reaction. This SN1 reaction, you can see in the first step the alkyl halide slowly dissociated to the halide ion and the carbocation. So that's what is happened. In the second step, carbocation at once combines with the nucleophile to form final substrate product. So in this the rate depends only on the concentration of the substrate. Beta Prajapati, yes, yeah, please ask a doubt. Beta Prajapati, you ask a doubt, come on, you ask a doubt. Okay, so आगे बढ़ो. The reaction follows the overall first order, and the first order with respect to alkyl halide and zero order with respect to the nucleophile. That's why we written the rate is directly proportional to Rx to the power 1 and the nucleophile power 0, right? What's your doubt? You tell me. Prajapati, what's your doubt? Come on. So this is what the mechanism is given. First step, the rate determining step, since it is a slope. Always formation of an intermediate supposed to be the rate determining step, and it's supposed to be slow. And the rate of a reaction, you see, tertiary alkyl halide is extremely reactive than secondary, than methyl, and primary than methyl. So I just want to give you SN1 reactivity is directly proportional to stability of carbocation. That is the trick you need to understand. SN1 reactivity is directly proportional to the stability of the carbocation, and this is the trick you can directly use for NEET examination, my dear students. Okay, right beta? Chalo. So the order of reactivity of various alkyl halides through SN1 mechanism: tertiary alkyl halide is greater than, secondary alkyl halide is greater than, primary alkyl halide is greater than methyl alkyl halide. Methyl alkyl halide is always कम से कम रिएक्टिविटी होगा 0.03 से 0.05 तक होगा, है ना. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अरे कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है SN1 एंड SN2. सो SN1 SN2 का पहला जो रिलेटिविटी देता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट. सो SN1 nucleophile strength is unimportant. SN2 strong nucleophiles are required. In SN2 reaction with CH3 nucleophilicity order is this. So SN2 reaction जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट का अंदर घुसने के बाद ये अटैक कर रहे हैं ना. सो ये न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा. Okay, so the condition for SN2, the strong nucleophile is required, whereas SN1 already solvent clean the substrate and make a nude carbocation, so that nucleophile आसानी तरीका काट रहे हैं. So that nucleophile strength is not at all important on SN1, but SN2 ज़्यादा important है. So weak nucleophile favors SN1, strong nucleophile favors SN2. That's what I want to say. ठीक है, with my experience में बोल रहा हूँ ना. So हर जगह पे जो small trick दे रहा है आपका छोटा सा, ये सीधा इस्तेमाल करो चलेगा वो. So पहला जो है effect of nucleophile. So strength of nucleophile दिया, you can see electronegativity ज़्यादा है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर कम है, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है. मैं जो दिया ना इसी का हिसाब से ऑर्डर मिल जाएगा आपको, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट आपका आएगा क्या, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. सो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट. सो जहां पर सो SN1 सबस्ट्रेट tertiary greater than, secondary greater than primary, so methyl halide unlikely. Whereas SN2 substrate primary greater than, secondary greater than,
tertiary. Now I just want to say here, CH2X benzyl is greater than CH2 double bond CH and CH2X allyl. So this is true for both SN2, SN1. That is true for both SN1 and SN2. That's very important. So wherever SN1 comes, SN2 का ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स नहीं होगा, ठीक है. So planarity in alpha beta position makes it more reactive in SN2 as well. Of course, और छोटा सा ट्रिक फिर भी बताना चाहता हूं मैं, for SN2 reactivity inversely proportional to steric. जहां पर स्टेरिक ज्यादा है वहां पर SN2 कम है ना. और एक है जहां पर SN1 है is directly proportional to stability of carbocation. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जिस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका SN1 रिएक्शन भी ज्यादा होगा. राइट इशिता, रिचा, राइट, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर गेटिंग, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यू आर ऑल विथ मी. सिमरन, होप यू आर एंजॉयिंग योर फर्स्ट क्लास इन टुडे. हाउ इज योर फर्स्ट क्लास विथ इन्फिनिटी लर्न विथ सुरेश सर? बोलना तेज आवाज से बोलो, फायर इमोजी डाल के बोलो. That's great. That's great. Yes. Now this is the effect of substrate. And आपका आएगा solvent. जहां solvent देखना, solvent plays a least role in deciding SN1 and SN2. So SN1 is favored in good ionizing solvent. SN2 may go faster in less polar solvent. You require here बेटा, you require here SN1 चीज है इसका polar protic solvent, polar protic solvent. Polar protic solvent. PPS favors SN1 and polar aprotic solvent favors SN2. Polar aprotic solvent, you can say polar aprotic solvent. So polar aprotic solvent. So can somebody give me the example for polar protic solvent, my dear children? Yes, सिमरन आप दे सकते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं सिमरन? हाँ, polar protic solvent means the solvent which can form hydrogen bonding, can donate H plus. Okay, कपिल, that's good. H2O दे सकते हैं. Okay, C2H5OH दे सकते हैं. Anything it can give. अमोनिया भी है, राइट बेटा? यस. एंड पोलर अप्रोटिक का कुछ एग्जाम्पल आप बना सकते हैं कपिल, इशिता. यस, वाटर हियर इट इज गिवन, दैट्स गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अमोनिया, यस, अमोनिया, राइट. हियर एग्जाम्पल से डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड, dimethyl sulfide, dimethyl formamide, acetone. So these are the other examples with that, dimethyl acetamide. Yes, Kapil, Vishal.
So deciding the either SN1 and SN2 जो है ना, the solvent देख के नहीं बनाना, खतरनाक point है. So solvent plays a least role in deciding SN1 and SN2, my dear children. Simran, Shahid, hope you are understanding. Yes, yes, Ishita, great. Okay, talking about stereochemistry. In SN1 stereochemistry आप देखना. Yes, where is my structures? Yes, यहाँ पर जो है, yes, here stereochemistry, if it is a plus, you are going to get plus as well as minus products, so that this is retaining the stereochemistry, you can say retention. Retention. This is what you call retention. Whereas you can see reversing of the stereochemistry, that you can say inversion. That's a different way of discussion. In SN2 only inversion takes place. Here retention as well as inversion takes place. That's good. So आपका पूरा प्लस माइनस मिलके क्या होगा? प्लस माइनस मिलके क्या होगा? आप बोलो. प्लस माइनस मिलके, yes, you are going to get a racemic mixture. The process of the formation of racemic mixture, आप क्या बोल रहे हैं? Racemization. This is what you call it as a racemization. है ना? That's fine. That's fine. Here let us see the stereochemistry of SN1 and SN2. है ना? Stereochemistry of SN1 and SN2 here. Yes. Comparison किया हम लोग. Now talking about stereochemistry. SN1 stereochemistry, the mixture of products with retention and inversion and the racemization takes place. Right? Whereas SN2 stereochemistry, complete inversion takes place. इसका नाम क्या है बेटा? Walden inversion. This is what you call it as Walden inversion. समझ में आ रहा है क्या बेटा? कोई डाउट है ना तो पूछना. And talking about rearrangement, जहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है ना, कार्बोकैटायन का एक तकलीफ है, ये कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल तक ये खुद रीअरेंज कर सकते हैं. सो SN1 में आपका रीअरेंजमेंट होने का संभावना है अगर चांस मिलेगा तो. सो SN2 में बिल्कुल रीअरेंजमेंट नहीं होगा, SN1 में हो सकता. ओके, दैट्स गुड रोहन. ओके सिमरन, राइट कपिल. Okay, take care. One more, replacement by hydroxyl groups. जो reactions है SN1 और SN2, मान लो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलना. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ये दो तरीका है. ये जो भी SN1 होगा और SN2 होगा और मिक्स भी होगा, है ना. उसमें RX when it is treated with KOH aqueous, you are going to get ROH and KX. This is replacement by hydroxyl group. उसमें alkyl halide is treated with alcoholic KOH ना, aqueous KOH. Let us say methyl chloride. Simply you can write potassium hydroxide aqueous. You are going to get methyl alcohol प्लस पोटेशियम क्लोराइड. बस. नाउ अब रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप है. अरे अभी आना है. ओके, व्हेन KCN is treated, you are going to get alkyl cyanide. Alkyl cyanide. This is what you call it as alkyl cyanide.
when AgCN is treated, you are going to get alkyl isocyanide. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक चीज है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. कभी सुना है क्या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है क्या? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इज अ न्यूक्लियोफाइल सच एज साइनाइड, नाइट्राइट, okay, which have more than one donor nucleophilic site through which reaction occurs. It is called ambident nucleophile. C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आना है. यू आर गोइंग टू गेट ऐसे, है ना. नाउ इन दिस केस आई वांट, अगर साइनाइड कार्बन से काटने तो साइनाइड मिलेगा, नाइट्रोजन से काटने तो आइसोसाइनेट मिलेगा. सो एक ऐसा कर सकते हैं. सो इट इज आयोनिक, सो दैट आपका मिलेगा आयोनिक, आपका मिलेगा K प्लस एंड Cn माइनस, सो दैट कार्बन से काटने दो साइनेट मिलेगा. बट इट इज कोवैलेंट बेटा, दिस इज कोवैलेंट, इट इज कोवैलेंट. कोवैलेंट का वजह से क्या होगा बेटा, सिल्वर साइनाइड बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, सो दैट ए बॉन्ड ब्रेक करने का मुश्किल है. देयरफॉर नाइट्रोजन से काटना, सो ए नया बॉन्ड ये नाइट्रोजन से लगा हुआ आइसोसाइनाइड मिलेगा. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का वजह से हो रहा है बेटा. वेरी गुड. एनी डाउट बेटा? क्लियर, राइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट so nucleophilic substitution reactions, replacement by nitrite, replacement by nitro. So अगर KNO2 द काटने तो so you are going to get a nitroalkane. Okay, so alkyl nitrite, nitroalkane, alkyl nitrate मिलेगा. So AgNO2, KNO2. Here KCN, you can see KCN, AgCN. Okay, now here it is KNO2 and AgNO2. So nitrite, okay, and nitro. So alkyl nitrite, nitroalkane. Understand? This is called alkyl nitrite. This is nitroalkane. So these are all very important reactions, Kapil. सो आइसोसाइनाइड बनाने पे पंजेंट स्मेल होगी AgCN केस में. दैट इज वैलिड पॉइंट कपिल विशाल. सो हियर cyanide is isocyanide is formed. Here isocyanide in the chemistry, they have bad smell. They have bad smell, poisonous behavior, right? Kapil Vishal, I like this kind of interventions during the class. I appreciate it. है ना? Great beta. So this is about nitrite and nitroalkanes, right beta? Now replacement by alkoxy group, that's very important. So when you replace with alkoxy group, this is going to form an ether. This reaction, what do you call it as? Williamson ether synthesis. So replacement by alkoxy group. Ethers are formed when haloalkanes are treated with alcoholic sodium or potassium alkoxide. This reaction you call it as Williamson ether synthesis. Replacement by hydroxyl group. Okay, Kanu Sharma, I'll go back to the session. Go back to that. Okay, just hold on for a minute. Okay, यहाँ पर देखो C2H5Cl है ना. So NaOC2H, sodium ethoxide. So this is sodium ethoxide, and this is going to be partial negative charge and partial positive charge. So it is going to give you a nucleophilic attack. So that it is going to get C2H5 OC2H5 ether. This reaction is known as Williamson ether synthesis. ये पक्का SN2 होगा. ये SN2 रिएक्शन में
ईथर सिंथेसिस एंड चैप्टर ईथर अगले हफ्ते में हम देखना है. Understand? Clear? Right. Now let us talk about this substitution by moist silver oxide. I'll go back, Kanu Sharma, I'll go back to the hydroxyl group substitution. Okay, so substitution by moist silver oxide, Ag2O silver oxide, if you add a little bit of water, you are going to make a paste, so that water से react होने तो AgOH मिलेगा, है ना. So that AgOH, Ag plus OH minus. So what happened? It is going to be nucleophilic substitution reaction. You are going to get alcohol as a product. Alcohol as a product, है ना. Alcohol as a product. अगर आप ड्राई Ag2O इस्तेमाल करने तो आपको ईथर मिलेगा. So try to understand the variation between these two, and NEET examination में very important conversion में काम आ जाएगा आपको. Silver oxide is extensively used in the laboratory for kind of conversions. Understand? Clear? Fine. Richa, Kanu, right. Rushan, Simran, Kapil, all students really enjoying the session, right? एक बार thumbs up मार लो. Thumbs up. Okay, very good. Now you are talking about hydroxyl group ना कानू शर्मा? Yes, replacement by hydroxyl group. इसका doubt क्या कानू? Okay, very good. So last में थोड़ा सा thumbs up fire emoji दाने तो हमको session ending में हमको भी अच्छा लगेगा. 100% clear. Thank you, Kapil. And Kanu, you asked some doubt here, right? Kanu, right? Come on, जल्दी. So session ending में थोड़ा सा chart rate बढ़ाना है. Okay. अरे fire emoji कहाँ? Yes, Rushan, very good. Okay, Kanu, did you find any difficulty here? Fine. जल्दी करना है. ये एनसीईआरटी बेस्ड का है कानू शर्मा, ये एनसीईआरटी बेस्ड का है. और कुछ डाउट है ना तो पूछना. पक्का एनसीईआरटी बेस्ड का है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अलग नहीं होगा. अगर कुछ आपको लगे तो पूछना. सभी एनसीईआरटी बेस्ड का है, सभी एनटीए सिलेबस का ये डायरेक्शंस का हिसाब से है. Thank you, Ishita. Very good. Nice. Thank you for your compliments. Okay, आगे बढ़ूँ मैं? Okay, come on. Let us talk about replacement by amino group. Right? So this is what you call it as Hoffman ammonolysis. So this is C-ethyl chloride. When you just take ammonia, it is going to take this is a SN2 reaction. So that HCl निकलेगा, क्लोरीन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से. So प्राइमरी अमीन मिल गया. कानू सर, मुझे नीट क्रैक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबका इम्पॉर्टेंट है. ये मेरा काम है, हमारा ऊपर यकीन रखना. सो दैट जस्ट हमारे ऊपर भरोसा रखना है ना, हम यकीन दे रहा हूँ. इफ यू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, okay, without any fail, without any deviation, the directions given by the faculties, eminent faculties from Infinity Learn, definitely you will get NEET, definitely you will clear NEET. सही सुना, आप सही सुना, definitely you clear NEET. Not only you will get a topper in that. Okay, so what happened, this is फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये प्राइमरी अमीन, और एक से रिएक्ट करने तो सेकेंडरी अमीन बनना है, और एक से रिएक्ट करने तो टेरिशरी अमीन बनना, और एक से रिएक्ट करने तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाना है. सो ये क्वाटरनरी मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन, secondary amine, tertiary amine, and quaternary amine salts are formed during this reaction. This is called Hoffman ammonolysis.
Okay, so I will tell you one more important point here, replacement by hydrosulfide group. So KSH, K plus SH. Okay, this K plus SH is going to attack here KSH. Okay, so this is what you call it as a thiol, ethyl thiol. This functional group is called thiol. जहाँ पर OH है अल्कोहल, जहाँ पर SH है thiol है. Sir, yes, Kanum, definitely during a live class I told this is a live class for free of cost to everybody, but I am not going to ignore anybody's message, because every point, every reaction we are discussing in the class is important. You can see this is C2H5OH na. So this is a C2H5OH. Look at this. Okay, you can say RCl. When it is treated with NH3, इसमें एक हाइड्रोजन, ओके, इसमें एक क्लोरीन निकाल के RNH2 बन गया है ना. दिस इज योर प्राइमरी अमीन. कानू शर्मा, इज दैट फाइन? राइट. सो ये और एक बार RCl से रिएक्ट होने तो इसे क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल के HCl निकाल दो, secondary amine RCl, you are going to see, so you are going to get a tertiary amine like this. You understand? Clear beta? Yes, thank you very much. Anyways, we got a very good spell of all the reactions. ये न्यूक्लियोफाइल होता है क्या, यहाँ से हम शुरू किया. ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 दिया, SN2 दिया, SN1 SN2 का कंडीशंस भी दिया एंड मिक्सड भी किया, कंडीशंस टू डिसाइड SN1 SN2 दिया, एंड वी आर गिविंग वेरियस एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो ऑफलाइन क्लास करना चाहता हूँ कानू. आई जस्ट प्रॉमिस यू दैट इफ यू अटेंड ये जो यूट्यूब सेशंस है ना, ये काफ़ी है. ओके, इफ यू गो टू ऑफलाइन सेशंस ना, you have so many hurdles. Here the best faculties from Infinity Learn by Sri Chaitanya, who got the track record of producing the best results in Sri Chaitanya and Infinity Learn, we are teaching you guys for the free of cost. है ना बेटा? So best batch है ये हमारा, जो best batch में रोज क्लास होगा. So every day you join and you learn it, you will get the best. है ना Avani? Yes. So please like the session if you like, and share with your friends and subscribe to the NEET STEP UP program. You will get an updates on this. Okay, thank you very much. Tomorrow we are going to discuss about the overall picture about SN1 and SN2 along with elimination with aryl halides bhi kal karna hai. Okay, all the best. Signing off here, Suresh, Faculty of Chemistry from Infinity Learn. Bye bye. Thank you very much. See you.